Welcome to Success Corner. Hope your studies are going all fine. So, we have started, as you all know, a new series in which we talk about JEE Mains, JEE Advanced और engineering के बारे में हम लोगों को गाइड करते हैं. नया series we have started, and in that series we have already put two videos कि JEE Mains होता क्या है and how to go about it, and the second video is on JEE Advanced होता क्या है. So today I have brought to you the latest rankings of the top 10 engineering colleges in India जो NIRF rankings आई है which have just come today, that is on 12th June. So I'm going to share this latest rankings with you so that आप नीट के लिए मोटिवेट हो सके इन rankings को देख के और you can get admission into your dream college. Okay, so these are NIRF rankings which have a great reputation in India. सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर डिपेंड होता है, यही इसी को लोग मानते हैं NIRF rankings के. होता क्या है, I'll be talking in the subsequent slides and what rankings are there. Before that, like, share and subscribe this channel if you have not, and share it with your friends. So let's start. What is NIRF? NIRF होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. ओके, सो ये रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के द्वारा, which is a part of government of India. Okay, and it ranks all institutions of higher education, चाहे मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, किसी के भी हो, तो इसके ये रैंक करता है. So what are the ranking criteria in NIRF? So first is TLR. TLR means teacher learning and resources. कि teachers कैसे हैं, learning कैसी चल रही है वहाँ पे, what resources the college has and what does it provide. इसके ऊपर ये 100 marks के ऊपर सारे out of 100 होते हैं सारे criteria, and the college is judged out of 100 for the following criteria. The second is RPC, research, professional practice and collaborative performance. इस पे बहुत ज़्यादा importance होता है because the more research an institution conducts, the more points it gets. Okay, research पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है ये, और कैसे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे, प्रोफेशन कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, कैसी टीचिंग होती है. ओके, नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस, कि कोलैबोरेशन कैसा है उस इंस्टीट्यूट में और बाकी इंस्टीट्यूशंस में, कोलैबोरेशन कैसा है ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा एक्सपोजर मिल सके. नेक्स्ट इज OI, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी. ओके, आउटरीच मतलब इस कॉलेज के रीचेस कहाँ कहाँ तक है, विच कंपनीज कैन दे ब्रिंग इन टू देयर कॉलेज सो दैट जो स्टूडेंट्स वहां के हैं उनको जॉब्स मिल सके. कैसा आउटरीच है, विच कंपनीज कम टू देयर कॉलेज. ठीक है, इसका मतलब ये है मेनली आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी का. जियो है ग्रेजुएशन आउटकम, कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, हाउ मेनी गेट जॉब्स, हाउ मेनी आर सक्सेसफुल, हाउ व्हाट पैकेजेस आर बैक्ड बाय देम. तो ये आउटकम डिपेंड करता है, ये 100 में से जो पॉइंट्स ग्रेजुएशन आउटकम में मिलते हैं. एंड द लास्ट वन इज परसेप्शन. ओके, व्हाट इज परसीव्ड, कि ये कॉलेज कैसा है, दिस इज परसेप्शन. ऑल ऑफ देम आर मार्क्ड आउट ऑफ 100. सो लेट्स स्टार्ट विद द ओरिजिनल रैंकिंग्स. कैसे top 10, 10th position we have the Indian Institute of Technology Indore. Okay, so we have this college, and here you can see नीचे आपके सारे out of 100 marks दे रखे हैं. Okay, इसका average जो है, this is the average score for this institute. So this is IIT Indore on the 10th position. Ninth position and maintaining its hold is National Institute of Technology Tiruchirappalli, and this NIT Tiruchirappalli is better than most of the IITs. Okay, so ये आप मेंस से भी क्लियर कर सकते हैं. अगर मेंस में आपके अच्छे रैंक आई है तो आपको ये भी मिल सकता है. एंड द टेबल इज देयर, यू कैन सी what score it has bagged in the particular criteria. Position we have Indian Institute of Technology Hyderabad. Okay, this is a very good college, and the marks which it has scored out of 100 is given in the table below. Position पे college है IIT Guwahati, Indian Institute of Technology Guwahati. This has a beautiful campus. Okay, and you must sure go and visit this if you get a chance. Sixth position पे है IIT Roorkee, Indian Institute of Technology Roorkee.
This also has a beautiful campus, and this has slipped a couple of places to the 6th position. On the 5th position is Indian Institute of Technology, Kharagpur. The 4th position is bagged by Indian Institute of Technology, Kanpur, IIT Kanpur. Okay, this is also slipped a position to the 4th ranking in the NIRF 2020. Third is Indian Institute of Technology, Bombay, and this is one of the college which comes in the top 100 rankings in the world also. Okay, and this is on the 3rd position in India in engineering college. Second is Indian Institute of Technology, Delhi. This college is also among the top 100 colleges in the world. Okay, position or the first, which is the topmost college for engineering in India this year, is Indian Institute of Technology, Madras, IIT Madras. This has gained a couple of positions from previous year to come first. Okay, and on perception they have scored 100 out of 100, and this is also one of the colleges which is ranked in the top 100. So guys, these were the top 10 engineering colleges of India according to the NIRF rankings of 2020. Okay, ये हैं latest rankings हैं, इससे latest आपको मिलेंगे नहीं. Okay, so take motivation from this, see your colleges, take motivation, prepare well, and crack JE. Okay, and if you have not still liked, shared, and subscribed this channel, do it and share it with your friends. And don't forget to put a like. I am looking for 100 likes. All the best, guys.